Good evening, everyone. Today's speech, today's topic is, in the first part, the three planes of human life. That is JAGRATA, SWAPNA, and SUSHUPTI. So let us discuss the first part of the speech. So I have taken this speech from the article written by W.Q.Judge in the Path magazine in August 1888. And it was also published in one of the pamphlets of the Theosophical Society. But I have made it in simple language. This is a very short article written by W.Q.Judge in the Path magazine in August 1888. Let me say about something about the W.Q.Judge. W.Q.Judge, he was born in 1851 and died in 1896. He was an Irish-American mystic, lawyer, and co-founder of the Theosophical Society in 1875 alongside HPB and Colonel Alcott. He was a principal leader of the American section also, and a major proponent of the Theosophical teachings. He wrote the book, The Ocean of Theosophy. Now let us see about the three planes or states of human life. These are the states through which every one of us passes daily, whether we are aware of them or not. These three states are known in ancient wisdom as Jagrut, Swapna, and Sushupti. That is waking, dreaming, and dreamless sleep. Now let us speak of the common man or ordinary human being. The common man or person is conscious of only one state, and that is the waking state. When we sleep and dream, or when we enter deep dreamless sleep, we pass through those states unconsciously or naturally. We return to waking life with little memory and no continuity. But this is not true of the person who are spiritually awakened, like the adepts, the yogis, the Mahatmas, and the Buddhas. Such beings are fully conscious in all these states, and even in higher one beyond those. For them, consciousness does not break when the body sleeps. In common man, the consciousness always breaks. But for these spiritually awakened persons, consciousness does not break when the body sleeps. Their consciousness flows on alert, clear, and continuous. This difference marks the distance between the ordinary humanity and spiritual mastery. Now every earnest seeker, every serious theosophist or Theosophical Society's member should understand the importance of these three states. Why? Because spiritual growth requires continuity of consciousness. This is important. The spiritual growth requires continuity of the consciousness. I explain here, growth does not mean only reading books or doing rituals.
Real growth means continuity of awareness or consciousness. What is gained in deep inner stillness, Sushupti state, should not be lost in dreaming or Swapna state. What is glimpse in dream state should not disappear when we awake in Jagrat state. It means inner experiences must be remembered and understood, and also those lived. Otherwise, they remain only a passing shadows. They remain only as passing shadows. Now let us see a very important thing, that although higher states exist, true regeneration must take place in waking state also. It is here in daily life, in conscious choice, in the right action, in self-control and service, that the self, here capital S, self is self within must awaken. Salvation cannot be achieved in sleep. Liberation cannot be reached unconsciously. Transformation must occur while we are awake and embodied. Means, here I explain here, means you choose between right and wrong. Control your action, purify your thoughts, and serve others consciously. When death comes, a human being may pass into many conditions that are states of rest or joy or suffering or learning in what traditions call heaven, hell, devchan, and so on. But from all these states, return to rebirth is inevitable. There is only one condition from which return is not forced, and that is the supreme state. And let this be clearly understood, that supreme state cannot be entered accidentally or suddenly. It cannot be reached after death if it was not entered in life. It can be attained only by self-perfection while living in the body. It means supreme state is reached only when a person has purified himself, awakens fully, and realizes the self. The masters reached those shining heights because they took the necessary steps. How they took the necessary steps? Consciously, deliberately, patiently, step by step, and life after life. And the beauty of the law is this: the very first step already contains the last. Every right cause set in motion inevitably produces its natural results. No sincere effort is ever lost. No spiritual striving is wasted. So remember this: you pass daily through waking, dreaming, and deep sleep. But liberation becomes when consciousness awakens in waking life. In waking life itself, when the self within becomes known, lived, and expressed. That is the path. And that is the purpose, and that is the promise of human life. Now, waking state and dream state. We think
feel, do while awake directly affects our dream. If your waking life is calm, honest, focused, your dreams tend to be lighter and clearer. If your waking life is full of anger, greed, fear, guilt, or obsession, those same things appear in dreams. And it works both ways. Dreams influence our waking life also. A bad dream can disturb your mood all the day. A good dream can inspire you or guide you. That is why all cultures in the world, all traditions and cultures say people get warnings, ideas, or temptation in dreams. Even religious stories mention this, that messages coming in sleep. This passage gives a strong point. Some people commit wrong actions because the idea first came in the dream. Why? Because their waking thoughts were already impure. The mind was already dirty. So dreams became dirty too. So simple truth is here, if you poison your waking mind, you poison your dream mind. If you clean your waking mind, dreams also become cleaner. So the author just says it is our duty to keep both waking and dreaming states pure. Deep sleep, sushupti. Deep sleep is sushupti, more than just sleep. So now comes this third state, sushupti. Deep sleep, usually called dreamless sleep. But the author says, why? Because in deep sleep, the noisy thinking mind is silent. Ego is absent. Even bad people also get temporary rest from their lower natures. This state protects humanity, stops people from becoming completely evil, gives inner healing even without our efforts. You don't choose it. You don't control it. Yet it refreshes the soul every night. That is why after deep sleep, you feel lighter, calmer, and reset. It is called a spiritual reservoir, a silent inner source that keeps life from collapsing into chaos. So this was the first part of these topics. Thank you very much. थैंक यू नंद कुमार जी, एज यूजुअल आप बहुत ही सटीक समय पर आपका पाठ समाप्त किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योगिनी जी को, जो मराठी में इस लेक्चर का भाषांतर करेंगी, मगर उसके पहले छोटा सा परिचय उनका। योगिनी गोखले जी, आप डोंबिवली लॉज की सक्रिय सदस्य हैं। आप 5 साल से भगवत गीता पर ऑफलाइन और ऑनलाइन व्याख्यान कर रही हैं। हमारे रोज के जीवन में भगवत गीता के तत्व कैसे आचरण में लाए जाए, इस पर आप मार्गदर्शन करती हैं। आप अप्रैल 2024 से उपनिषद और थियोसॉफी ग्रुप के लिए ऑनलाइन व्याख्यान कर रही हैं और एक बहुत ही हमारी त्रिवेणी की सदस्य बहुत ही सटीक मराठी में करने वाली। तो योगिनी जी, आपका स्वागत है। पार्ट 1 इन मराठी। नमस्ते जी, आज आपण बघणार आहोत, आजचा विषय आहे मानवी जीवनाचे 3 स्तर। ते कुठले 3 स्तर आहेत? एक आहे जागृत, दुसरा आहे स्वप्न आणि तिसरा आहे सुषुप्ती। पार्ट 1 भाग 1। ऑगस्ट 1888 मध्ये पाथ या मासिकामध्ये W.Q.Judge यांनी लिहिलेला हा एक छोटासा लेख आहे।
आपल्यापैकी प्रत्येक जण दररोज या तिन्ही स्तरांमधून जात असतो, जागृत, स्वप्न आणि सुषुप्ती. त्याबद्दल आपण आज जाणून घेऊया. मग त्याची आपल्याला जागृत, स्वप्न आणि सुषुप्तीची जाणीव असू दे किंवा नसू दे, पण आपण दरवेळेला त्या स्तरांमधून रोज मात्र जातच असतो. या तिन्ही अवस्था ज्या आहेत त्या प्राचीन ज्ञानामध्ये आलेल्या आहेत की बाबा जागृत आहे, स्वप्न आहे आणि सुषुप्ती आहे. म्हणजे जागृत म्हणजे काय, तर सतत आपण त्या स्थूल देहाबरोबर राहून जो सतत अनुभव घेत असतो त्याला जागृत म्हणतात. दुसरी जी स्टेज आहे ती झोपेमध्ये स्वप्न बघणे, स्वप्न पाहणे. आणि तिसरी जी स्टेज आहे ज्याला सुषुप्ती म्हणतात, त्याचा अर्थ असा आहे की गहरी नींद ज्याला आपण म्हणतो, गाढ झोप लागते, त्याचा अर्थ सुषुप्ती, स्वप्नरहित झोप. आता आपण सामान्य मानवाबद्दल बघूया की त्याचं जीवन कसं असतं या तिन्ही अवस्थांमध्ये. सामान्य व्यक्तीला फक्त एकाच अवस्थेची जाणीव असते आणि ती म्हणजे जागृत अवस्था, जी आता आपण अनुभवतोय ती. पण जेव्हा आपण झोपतो किंवा झोपेमध्ये स्वप्न बघतो किंवा झोपेमध्ये खोल स्वप्नरहित सुषुप्तीमध्ये आपण जेव्हा प्रवेश करतो, तेव्हा आपण या तिन्ही अवस्थातून नकळत जात असतो, सबकॉन्शियस आपल्या लेवलमध्ये. आपण जागृत जीवनात परततो त्या क्षणी आपली स्मरणशक्ती थोडी कमी असते. म्हणजे जेव्हा या आपण दोन्ही अवस्थांमधून परत जागृत मध्ये येतो, तर त्यावेळेला आपली स्मरणशक्ती थोडीशी कमी असते आणि त्याचं सातत्य नसतं. आता हे जे आहे एक रफ कॅल्क्युलेशन आहे बरं का, सामान्य माणसाच्या बाबतीमध्ये. पण प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये हे काही खरं असंच असेल असं मात्र नाही. तरी सुद्धा जे आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत असतात, जसे की योगी आहेत, महात्मा आहेत किंवा एखादे बुद्ध आहेत, अशा व्यक्तीमध्ये या सर्व अवस्थांमध्ये किंवा त्या पलीकडे सुद्धा ते गेलेले असतात, या तिन्ही अवस्थांच्या पलीकडे पण ते गेलेले असतात आणि तरी सुद्धा ते पूर्णपणे जागरूक असतात. त्यांच्यासाठी शरीर झोपलेलं असताना सुद्धा त्यांची चेतना खंडित होत नाही. हे नॉर्मल लेमॅन आणि विशेष माणूस याच्या दोघांमधला हा फरक आहे. ती स्पष्ट आणि सतर्क राहते. योग्यांमध्ये नंतर बुद्धांमध्ये, महात्म्यांमध्ये ही जी चेतना आहे तर ती सतर्क राहते, स्पष्ट राहते. आणि हा फरक सामान्य मानवता आणि आध्यात्मिक प्रभुत्व असलेल्यांच्यामध्ये अंतर दर्शवतो. आता प्रत्येक जिज्ञासू साधकाने, गंभीर थिओसॉफिस्ट जो आहे, तर ह्या तिन्ही अवस्थांचं महत्व समजून घेतलं पाहिजे की नाही. कारण आध्यात्मिक विकासासाठी याचं खूप महत्व आहे आणि ही चेतना आपल्याला आवश्यक असते. खोल आंतरिक शांततेमध्ये ती मिळते, म्हणजे सुषुप्ती अवस्थेत ते स्वप्नामध्ये हरवायला नको. तसंच स्वप्नात जे दिसते ते आपण जागृत अवस्थेमध्ये जागे झाल्यानंतर अदृश्य पण व्हायला नको. याचा अर्थ असा की आंतरिक अनुभव लक्षात ठेवले पाहिजेत, समजून घेतले पाहिजेत आणि ते जगले पण पाहिजेत. कधी कधी उठल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं ना की मी स्वप्नातून जागी झाल्यानंतर काय स्वप्न पडलं होतं पूर्णच्या पूर्ण आठवतही नाही. असं बघायला गेलं आपल्याला जे दीर्घ स्वप्न वाटतं ना ते सुद्धा 3 सेकंदाचं वगैरे असतं फक्त, खरं बघायला गेलं तर. आणि ते जे आहे ते आपल्याला उठल्यानंतर अदृश्य होता कामा नये. याचा अर्थ असा की ते जे सगळे आंतरिक अनुभव आहेत ते आपण समजून घेतले पाहिजेत आणि जगले पण पाहिजेत. अन्यथा ते फक्त जाणाऱ्या सावलीसारखेच असतात, मग त्याचा काय उपयोग. आता आपण एक अतिशय महत्वाची गोष्ट अशी पाहूया की जरी उच्च अवस्था अस्तित्वात असल्या तरी जागृत अवस्थेमध्ये सुद्धा खरं परिवर्तन झालं पाहिजे. म्हणजे पुढच्या अवस्था येण्यासाठी आधी जागृत मध्ये आपलं काय परिवर्तन व्हायला पाहिजे ते आपण बघूया. येथेच दैनंदिन जीवनामध्ये जाणीवपूर्वक निवडीमध्ये, योग्य कृतीमध्ये आणि आत्मनियंत्रणामध्ये तसंच सेवेमध्ये आपलं अंतर्मत नेहमी जागृत राहिलं पाहिजे. अंतर्मनावरती आपण नेहमी कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. कारण काय, तर झोपेमध्ये मोक्ष मिळवता येत नाही किंवा नकळत मुक्ती सुद्धा मिळवता येत नाही. पण आपण जागृत आणि मूर्त असताना हे परिवर्तन घडलं पाहिजे. जेव्हा मृत्यू येतो तेव्हा मनुष्य अनेक परिस्थितीमध्ये जाऊ शकतो, ज्या विश्रांती किंवा आनंदाच्या, दुःखाच्या किंवा परंपरेनुसार स्वर्ग, नरक, देवाचन इत्यादीच्या ज्या शिकण्याच्या अवस्था असतात. परंतु या सर्व अवस्थांमधून पुनर्जन्माकडे परतणे अपरिहार्य असते. फक्त एकच स्थिती अशी आहे की जी आपल्याला परत येण्यास भाग पाडली जात नाही आणि ती म्हणजे सर्वोच्च अवस्था. आणि हे स्पष्टपणे आपण समजून घेतलं पाहिजे.
त्या सर्वोच्च अवस्थेमध्ये आपण अचानक प्रवेश करू शकत नाही. जर ते जीवनात मिळवलं नसेल तर मृत्यूनंतर आपल्याला ते कसं प्राप्त करता येईल? ते केवळ शरीरात राहून आत्मपरिपूर्णतेने आपल्याला प्राप्त करून घेता येते. महात्म्यांनी त्या तेजस्वी उंची गाठल्या कारण त्यांनी त्या जागृत अवस्थेमध्येच आवश्यक पावले उचलली. जाणीवपूर्वक जाणून बुजून संयमाने टप्प्याटप्प्याने आणि आयुष्यांनी कायद्याचे सौंदर्य असे आहे की अगदी पहिल्या पायरीतच आधीच शेवटची पायरी असते. म्हणजे जसं जसं आपण वागायचं इतकं उत्क्रांत होत राहू त्याच्या सुरुवातीपासूनच आपण ती लास्ट पायरी पण गाठू शकतो. प्रगतीपणे येणाऱ्या प्रत्येक योग्य किंवा अपरिहार्यपणे त्याचे नैसर्गिक परिणाम निर्माण करते. कोणताही प्रामाणिक प्रयत्न कधी वाया जात नाही. कोणताही आध्यात्मिक प्रयत्न कधीही वाया जात नाही. म्हणून हे लक्षात ठेवा की तुम्ही दररोज जागृती, स्वप्न पाहणे आणि गाढ झोपेतून जाता. परंतु मुक्ती केव्हा सुरू होते? तर जेव्हा चेतना जीवनामध्ये जागृत होते, जेव्हा आतील आत्मा ओळखला जातो, जगतो आणि व्यक्त होतो. आणि हाच त्याचा मार्ग आहे. उद्देश हाच आहे आणि तेच मानवी जीवनाचं आपलं अभिवचन आहे. तेच आपल्याला मिळवायचं आहे. म्हणजे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था याच्यामध्ये आपण जागे असताना काय विचार करतो, काय अनुभवतो त्याचा थेट आपल्या स्वप्नांवरती परिणाम होतो. जर तुमचे जागृत जीवन शांत, प्रामाणिक आणि केंद्रित म्हणजे एकाग्र असलेलं जर का असेल तर तुमची स्वप्न सुद्धा हलकी आणि स्पष्ट असतात. आणि जर तुमचं जागृत जीवन राग, एजिटेशन, लोभ, भीती, अपराधीपणा किंवा ध्यासाने भरलेलं असेल तर स्वप्नामध्ये पण नॅचरली तशाच गोष्टी सगळ्या दिसतात. आणि ते दोन्ही प्रकारे कार्य करतं. स्वप्न आपल्याला जागृत जीवनावरती आपल्या प्रभाव पडतात आणि जागृत जीवन स्वप्नावरती प्रभाव पडतं. एक वाईट स्वप्न दिवसभर तुमचा मूड घालवू शकतं, बिघडवू शकतं. तसंच एक चांगलं स्वप्न जर का पडलं असेल तर ते आपल्याला प्रेरणादायी किंवा मार्गदर्शक सुद्धा होऊ शकतं. म्हणजे हे दोन्ही इंटरकनेक्टेड आहे, जागृत आणि स्वप्न. आणि म्हणूनच सर्व संस्कृतीमध्ये म्हणतात की लोकांना स्वप्नामध्ये जे इशारे दिसतात, कल्पना किंवा प्रलोभन मिळतात. धार्मिक कथांमध्ये सुद्धा झोपेत येणाऱ्या संदेशांचा उल्लेख नेहमी आपल्याला बघायला मिळतो. हा एक उतारा मजबूत आपल्याला मुद्दा आहे. हा उतारा एक मजबूत मुद्दा देतो की काही लोक चुकीची कृत्य करतात कारण स्वप्नात प्रथम कल्पना आली का? कारण त्यांचे जागृत विचार आधीच अशुद्ध होते. मग मन आधीच घाणेरडं होतं आणि त्यामुळे त्यांची स्वप्न पण घाणेरडी झाली. साधं सत्य असं आहे, जर तुम्ही तुमच्या जागृत मनाला विष दिलं तर तुमच्या स्वप्नामध्ये पण मनाला त्या विषच मिळेल. जर तुम्ही तुमचे जागृत मन स्वच्छ केले तर तुमची स्वप्न पण स्वच्छ होतील. आणि म्हणून जज म्हणतात की जागृती आणि स्वप्न दोन्ही अवस्थांमध्ये अवस्था शुद्ध ठेवणे हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि गाढ झोप म्हणजे सुषुप्ती फक्त झोपेपेक्षा ती जास्त असते. जसं मराठीमध्ये एक म्हण आहे, मनी दिसे ते स्वप्नी वसे. अशी एक मराठीमध्ये म्हण आहे, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. जे आपल्या मनात आहे ते आपण स्वप्नात बघतो. आता तिसरी अवस्था अशी येते की ज्याला आपण गाढ झोप असं म्हणतो. तर त्याच्यात सहसा त्याला स्वप्नरहित झोप असं म्हणतात. पण जज काय म्हणतात की गाढ झोप का म्हणतात असं? कारण गाढ झोपेमध्ये गोंगाट करणारे, विचार करणारे मन शांत झालेले असते. अहंकार अनुपस्थित असतो. वाईट लोकांनाही त्याच्या निम्न स्वभावातून तात्पुरती विश्रांती मिळते. ही अवस्था मानवतेचे रक्षण करते, लोकांना पूर्णपणे वाईट होण्यापासून रोखते आणि आपल्या प्रयत्नांशिवायही आंतरिक उपचार देते. तुम्ही ते निवडत नसता, तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाहीत म्हणजे या गोष्टी. तुम्ही ते नियंत्रित करू शकत नाही. तरीही ते दररोज रात्री आत्म्याला ताजेतवाने करते, गाढ झोपेमध्ये सुद्धा. आणि म्हणूनच गाढ झोपेनंतर तुम्हाला हलकं, शांत, पुनर्संचयित वाटते. आणि याला आध्यात्मिक जलाशय असं म्हणतात. एक शांत आंतरिक स्त्रोत जो जीवनाला अराजकतेपासून जाण्यापासून रोखतो. त्याच्यामुळे गाढ झोप ही अतिशय महत्वाची आहे. आणि आपण उठल्यानंतर जसं म्हणतो की अरे वा, काय मला छान झोप लागली रात्री. आणि जर ती आपल्याला गाढ झोप लागली नाही तर आपला दिवसही तर वाईट जातो ना. आपण काय म्हणतो, रात्री माझी झोप चांगली झाली नाही त्याच्यामुळे माझा दिवस पण अफेक्ट होतो. हरिओम. पार्ट 1 इकडे संपलेला आहे, पुढचा पार्ट नंतर बघूया. थैंक यू योगिनी जी.
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मराठी में समझाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज जी को, जो हिंदी में इसको प्रस्तुति करेंगी, 3 प्लैनेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मगर उसके पहले उनका छोटा सा परिचय। आप राज ब्रजपुरिया जी हैं, आप कानपुर से हैं, आपने एमएससी बॉटनी से किया है और आपको थियोसॉफी आपके ससुर जी के द्वारा मिली है, उसकी उनकी प्रेरणा से मिली है। आप इस घर में शादी करके आई और उनकी प्रेरणा से आपने थियोसॉफी एक्सेप्ट करी। आप थियोसॉफी इसलिए भी ज्वाइन करी हैं क्योंकि आपके घर में ही थियोसॉफी की मीटिंग होती हैं, भारत समाज पूजा होती हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगता है। आप एक अच्छी गायिका भी हैं और भक्ति भाव के गायन बहुत अच्छे से गाती हैं। आज आप त्रिवेणी में पहली बार अपना हिंदी में वक्तव्य रजू कर रही हैं, पेश कर रही हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राज ब्रजपुरिया जी। आइए और आप पार्ट 1 इन हिंदी में प्रस्तुत करें। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है आवाज, प्लीज कंटिन्यू। विषय है मानवीय जिंदगी के 3 लेवल, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यह W.Q.Judge का अगस्त 1888 में पाथ पत्रिका में लिखा छोटा आर्टिकल है। आइए मानवीय जिंदगी के 3 लेवल या अवस्था के बारे में जानते हैं। ऐसी अवस्था जिनसे हम में से हर कोई रोज गुजरता है, चाहे हमें उनके बारे में पता हो या ना हो। प्राचीन ज्ञान में इन 3 अवस्था को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के नाम से जाना जाता है। यानी जागना, सपना देखना और बिना सपनों की नींद। अब हाँ, आम मनुष्य की बात करते हैं। आम इंसान सिर्फ एक ही अवस्था के बारे में जानता है, जागने की अवस्था। जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं, या जब हम गहरी बिना सपनों की नींद में चले जाते हैं, हम अनजाने में उन अवस्था से गुजरते हैं। हम बिना किसी याद और बिना किसी निरंतरता के से जागने वाली जिंदगी में लौटते हैं। लेकिन यह बात उस मनुष्य के लिए सच नहीं है जो आध्यात्मिक रूप से जागा हुआ है, जैसे कि सिद्ध योगी, महात्मा बुद्ध। ऐसे लोग इन सभी अवस्थाओं में और उनसे भी ऊंची अवस्थाओं में पूरी तरह से सचेत रहते हैं। उनके लिए शरीर से सोने पर भी उनकी चेतना नहीं टूटती। यह साफ, सतर्क और लगातार बहती रहती है। यही फर्क आम इंसानियत और आध्यात्मिक महारत के बीच की दूरी को दिखाता है। अब हर सच्चे साधक, हर गंभीर थियोसॉफिस्ट को इन 3 अवस्थाओं का महत्व समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक विकास के लिए चेतना की निरंतरता जरूरी है। गहरी अंदरूनी शांति। सुषुप्ति अवस्था में जो मिलता है वह सपने देखने में या स्वप्न में खोना नहीं चाहिए। स्वप्न की अवस्था में जो झलक दिखती है वह जागृत अवस्था में जागने पर गायब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अंदर के अनुभवों को याद रखना, समझना और जीना चाहिए। इस तरह वे सिर्फ गुजरती हुई परछाई बनकर रह जाती हैं। आइए अब एक बहुत जरूरी बात देखें कि भले ही ऊंची अवस्था मौजूद हो, लेकिन असली परिवर्तन जागे हुए में भी होना चाहिए। यही रोजमर्रा की जिंदगी में सोच समझकर चुने जाने पर, सही काम करने पर, सेल्फ कंट्रोल और सेवा में अंदर के सेल्फ को जागना चाहिए। बेहोशी में मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति अनजाने में नहीं मिल सकती, परंतु परिवर्तन तब होना चाहिए जब हम जागे हुए हों और शरीर में हों। जब मौत आती है तो इंसान कई ऐसी स्थितियों से गुजर सकता है जो आराम या खुशी, दुख या सीखने की अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें परंपराएं स्वर्ग, नर्क, देवलोक वगैरह कहती हैं। लेकिन इन सभी अवस्थाओं से पुनर्जन्म में वापस आना जरूरी है। सिर्फ एक ही स्थिति है जिससे वापस आना जबरदस्ती नहीं होता, और वह है सुप्रीम अवस्था। यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए। उस सुप्रीम अवस्था में अचानक से
नहीं जाया जा सकता। अगर इसे जिंदगी में कमाया नहीं गया तो मौत के बाद वहां नहीं पहुंचा जा सकता। इसे सिर्फ शरीर में रहते हुए सेल्फ परफेक्शन से ही पाया जा सकता है। महात्मा उन चमकदार ऊंचाइयों तक इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने जरूरी कदम उठाए, होश में सोच समझकर, सब्र से, एक एक कदम से और हर जिंदगी से। यहाँ पर नियम की खूबसूरती यह है कि पहले कदम में ही आखिरी कदम होता है। हर सही काम शुरू करने पर उसका अपना नेचुरल नतीजा जरूर आता है। कोई भी सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, कोई भी आध्यात्मिक कोशिश बेकार नहीं जाती। इसलिए यह याद रखें कि आप रोज जागते, सपने देखते और गहरी नींद से गुजरते हैं, लेकिन आजादी तब शुरू होती है जब जागते हुए जीवन में ही चेतना जागती है। जब अंदर का आत्म तत्व जाना जाता है, जिया जाता है और जाहिर होता है, यही रास्ता है, यही मकसद है और यही इंसानी जिंदगी का वादा है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। जागते समय हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका सीधा असर हमारे सपनों पर पड़ता है। अगर आपकी जागती हुई जिंदगी शांत, ईमानदार, प्रख्यात है तो आपके सपने हल्के और साफ होते हैं। अगर आपकी जागती हुई जिंदगी गुस्से, लालच, डर, गिल्ट या अवशेषण से भरी है तो वही चीजें सपने में आती हैं और यह दोनों तरह से काम करता है। सपने हमारी जागती हुई जिंदगी पर असर डालते हैं। एक बुरा सपना पूरे दिन आपका मूड खराब कर सकता है। एक अच्छा सपना आपको इंस्पायर या मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए सभी संस्कृतियों में कहते हैं कि लोगों को सपने में वार्निंग, आइडिया या लालच मिलते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक कहानियों में भी नींद में आने वाले इन संदेशों का जिक्र है। यह हिस्सा एक मजबूत बात बताता है कि कुछ लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि आइडिया सबसे पहले सपने में आया था। क्यों? क्योंकि उनके जागते हुए विचार पहले से ही गंदे थे, मन पहले से ही गंदा था, इसलिए सपने भी गंदे हो गए। सीधी सी बात है कि अगर आप अपने जागते हुए मन को जहरीला बनाते हैं तो आप अपने सपनों वाले मन को भी जहरीला बनाते हैं। अगर आप अपने जागते हुए मन को साफ करते हैं तो सपने भी साफ हो जाते हैं। तो जज कहते हैं कि जागने और सपने देखने दोनों अवस्थाओं को पवित्र रखना हमारा फर्ज है। गहरी नींद, सुषुप्ति मतलब सिर्फ नींद से कहीं ज्यादा है। अब तीसरी अवस्था आती है गहरी नींद, जिसे आमतौर पर बिना सपनों वाली नींद कहा जाता है। लेकिन जज कहते हैं क्यों? क्योंकि गहरी नींद में शोर मचाने वाला, सोचने वाला मन शांत होता है, अहंकार नहीं होता। बुरे लोग भी अपने बुरे स्वभाव से कुछ समय के लिए आराम पाते हैं। यह अवस्था इंसानियत की रक्षा करती है, लोगों को पूरी तरह बुरा बनने से रोकती है, हमारी कोशिश के बिना भी अंदरूनी इलाज देती है। आप इसे चुनते नहीं हैं, आप इसे कंट्रोल नहीं करते, फिर भी यह हर रात आत्मा को तरोताजा करती है। इसलिए गहरी नींद के बाद आप हल्का, शांत, रिसेट महसूस करते हैं। इसे एक आध्यात्मिक भंडार कहा जाता है, एक शांत अंदरूनी जरिया जो जिंदगी को अस्त व्यस्त होने से बचाता है। यहाँ यह पहला पार्ट समाप्त हुआ। थैंक यू राज, बहुत ही सटीक रीत से और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पहली बार प्रस्तुति करी है। बहुत बहुत स्वागत। नंद कुमार जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी पार्ट 2, द 3 प्लेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंग्लिश। स्वागत है। थैंक यू ब्रिज पुरिया जी, अच्छा रिप्रेजेंट किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। Now let us see the second part of this, concluding part of this subject.
To understand this subject better, let us look at something very familiar to all of us, and that is sleep. Every night, when we begin to fall asleep, our outer senses slowly become dull. The eyes stop seeing clearly. The ears stop hearing, and the body relaxes. At this point, the brain starts throwing up images, scenes from our day, from our thought, our worries, and our hopes. Soon these images turn into dreams, and we enter into the dream state. This dream state is not unreal. It is just as real as our waking life, only different in nature. You may imagine it as a middle region. On one side is waking life, and on other side is deep sleep, that is sushupti. As sleep deepens, we move beyond dream into deep dreamless sleep. Here the brain becomes quiet. There are no images, no disturbances, and in this state, the inner being experiences deep peace and harmony. In this state, our inner being experiences deep peace and harmony. The ancient teachers beautifully called this experience as the banquet of the gods, meaning a state of inner bliss and rest. Now, when we return to waking life, we must come back the same way we went in. We cannot jump directly from deep sleep to waking consciousness. We must pass again through the dream state. Even if later we do not remember any dream at all, but we must pass again that dream state. Here lies an important point. The ordinary person whose mind during the day is scattered, worried, unfocused, carries that same confusion into the dream state. Because of this confusion, when such person passes back through the dream state, the peace and benefit gained in deep sleep becomes mixed up and distorted. As a result, the waking person does not receive the full benefit of deep sleep, though it is his right and also his responsibility to do so, but he doesn't receive the full benefit of deep sleep. This clearly shows us something very important thing, that our thoughts and actions while awake have lasting effects even during sleep. Therefore, what should we try to do? We should try to clean and brighten the dream state. We should reduce confusion and make it more orderly and alive. When this happens, as we return to waking life, we can carry with us a clearer sense of the peace and insight experienced in deep sleep. And how is this achieved?
It is achieved by greater concentration during the day. That is, by holding high thoughts, by nurturing noble purposes, and by living as much possible in what is best and most spiritual within us while we are awake. If you do this, then sleep will no longer be just rest or for the body. It will become a source of inner renewal, clarity, and quiet strength for our daily life. Spiritual growth does not happen in 1 week or 1 year or sometimes even one lifetime. But once the journey truly begins, it always leads us forward, even into future lives, toward deeper understanding and inner perfection. When a person sincerely tries to live a higher life, something changes inside. A center of attraction is formed within them while they are awake. This means their thoughts, feelings, and energies slowly stop running in all directions and begin to move towards one clear inner point. Because of this inner focus, even the transition from waking life to dream becomes clearer. The person enters the dream state with more awareness. And from there, they can pass into deep sleep. That is Sushupti. Not in confusion, but in a calm and collected way. And when such a person returns to waking life, they do not come back empty-handed. They bring something. They bring back something valuable. A little peace, a little wisdom, a little inner strength gained from that deep and silent state. Now compare this with an unconcentrated person. An unconcentrated mind moves from waking to dreaming to sleep in scattered way. From waking to dreaming to sleep in a scattered way, like sand falling through sieves. Each moment is broken, confused, and irregular. Thoughts are random and experiences are unclear. But the concentrated person moves from one state to another like water flowing through a pipe or like sunlight passing through a lens that is smooth, steady, and focused. Their experiences are clearer, more meaningful, and more orderly. This is the real difference. This understanding is not complete or final, but it points us in the right direction. This subject is vast and very important. So the message for us is simple. We must purify our thoughts, raise our actions, and practice concentration during our waking life. Otherwise, we will keep passing every night into the sleep and returning every moment exactly the same, no wiser, no calmer, and no more helpful to others. But if we live thoughtfully and attentively, even small efforts create a connection like a thin spider's thread, leading us into the open space of the true spiritual life. So here we stop here, but I have added something here. So there may be a question, why
continuity of consciousness is necessary for spiritual growth. Spiritual growth happens step by step. If awareness keeps breaking and restarting, the inner lessons cannot be connected. If today you are calm and mindful, tomorrow completely unconscious and reactive, and the next day again trying to start afresh, then no deep inner change becomes permanent. Spiritual traditions say that growth begins when awareness, one, continues into dreams, becomes calm and luminous in deep sleep, and the third remains the same observer in all states. This continuity slowly breaks the feeling that I am only this body and this day's personality. So this feeling, it breaks when this continuity is there in the consciousness or awareness. And then the spiritual growth happens. Thank you. थैंक यू नंद कुमार जी। बहुत ही सिंपल सुंदर शब्दों में आपने जज जी का लिखा हुआ Thanks. आलेख पढ़ा। पार्ट 2 योगिनी जी मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ मराठी में पार्ट 2 कंक्लूडिंग पार्ट करी। थैंक यू। आजचा आपला विषय आहे मानवी जीवनाचे 3 स्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ती, पार्ट 2, भाग 2. हा विषय चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आपण आपल्या सर्वांना परिचित असलेल्या एका गोष्टीकडे बघूया. ती कुठली गोष्ट? तर झोप. दररोज रात्री जेव्हा आपण झोपायला जातो तेव्हा आपली बाह्य इंद्रिये हळूहळू मंद पावतात. डोळे स्पष्टपणे दिसणं बंद करतात. गाड्यांचे आवाज ऐकणं आपले बंद होतं आणि शरीर आराम करतं. या टप्प्यावर मेंदू आपल्या दिवसातील दृश्यांच्या प्रतिमा ज्या असतात त्या तयार करू लागतो. आपले विचार, आपल्या चिंता, आपल्या आशा आणि लवकरच ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ह्या सगळ्या प्रतिमा त्या स्वप्नांमध्ये बदलतात आणि आपण स्वप्नामध्ये प्रवेश करतो. ही स्वप्नातील अवस्था अवास्तव नाहीये. ती आपल्या जागृत जीवना इतकीच वास्तविक आहे. फक्त निसर्गात ती वेगळी आहे. तुम्ही ते एका मध्यम प्रदेशासारखी कल्पना करू शकता. एका बाजूला जागृत जीवन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला गाढ झोप आहे. झोप जशी जशी खोल होत जाते तस तसं आपण स्वप्नांच्या पलीकडे खोलवर जातो. स्वप्नरहित झोप. येथे मेंदू शांत होतो. कोणत्याही प्रतिमा नाहीत, कोणताही त्रास नाही. या अवस्थेमध्ये आपलं अस्तित्व जास्त खोल शांती आणि सुसंवाद अनुभवतं. प्राचीन शिक्षकांनी या अनुभवाला देवांची मेजवानी असं सुंदर म्हटलेलं आहे. याचा अर्थ असा की आंतरिक आनंद किंवा विश्रांतीची अवस्था आहे. आता जेव्हा आपण जागृत जीवनामध्ये परत येतो तेव्हा आपण ज्या पद्धतीने गेलो होतो त्याच पद्धतीने परत येतो. आपण गाढ झोपेतून थेट जागृत जाणीवेकडे जाऊ शकत नाही. आपल्याला पुन्हा स्वप्नातील अवस्थेकडे जावंच लागतं. जरी नंतर आपल्याला कुठलंही स्वप्न आठवत नसलं तरीही. येथे एक महत्वाचा मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे सामान्य व्यक्ती ज्याचे मन दिवसा विखुरलेले, चिंताग्रस्त किंवा अकेंद्रित असते, तो व्यक्ती तोच गोंधळ स्वप्नातील अवस्थेमध्ये घेऊन जातो. या गोंधळामुळे जेव्हा अशी व्यक्ती स्वप्नातील अवस्थेमधून परत जाते तेव्हा गाढ झोपेमध्ये मिळणारी शांती आणि फायदा त्याच्यात मिसळतो आणि विकृत होतो. परिणामी जागृत व्यक्तीला गाढ झोपेचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. जरी तो त्याचा अधिकार आहे तरी सुद्धा तसं करण्याची त्याची जबाबदारी आहे ती देखील होऊ शकत नाही. म्हणजे तो ते अनुभवू शकत नाही. थोडक्यात हे आपल्याला एक अतिशय महत्वाची गोष्ट स्पष्टपणे दाखवतं हे उदाहरण की जागृत असताना आपले विचार आणि कृतींचे दीर्घकालीन परिणाम होत असतात. झोपेत सुद्धा ते परिणाम होत असतात आणि म्हणून आपण काय प्रयत्न केला पाहिजे? आपण स्वप्नातील स्थिती स्वच्छ आणि उजळ करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि तिथला गोंधळ जो आहे तोही कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ती अधिक व्यवस्थित आणि जिवंतपणे केली पाहिजे. हे जेव्हा घडतं तेव्हा आपण जागृत जीवनामध्ये परत येतो. जेव्हा हे घडते
तेव्हा आपण जागृत जीवनात परततो, तेव्हा आपण गाढ झोपेमध्ये अनुभवलेल्या शांती आणि अंतर्दृष्टीची स्पष्ट जाणीव आपल्यासोबत घेऊन जाऊ शकतो. पण हे कसं साध्य केलं जातं? तर दिवसा जास्त एकाग्रतेने उच्च विचारधारणा करून, उदात्त उद्दिष्टांचं पालन पोषण करून आणि आपण जागे असताना आपल्या आतमध्ये जे सर्वोत्तम आणि सर्वात आध्यात्मिक आहे त्यात शक्य तितके जगून हे सगळं साध्य होतं. जर आपण हे केलं तर झोप ही फक्त शरीरासाठी विश्रांती राहणार नाही, तर ती आपल्या दैनंदिन जीवनातील आंतरिक नूतनीकरण, स्पष्टता आणि शांत शक्तीचा स्रोत बनेल. आध्यात्मिक वाढ एका आठवड्यामध्ये किंवा एका वर्षामध्ये किंवा कधी कधी एका आयुष्यातही पूर्ण होऊ शकत नाही. परंतु एकदा खरोखर हा प्रवास जर सुरू केला की आपल्याला नेहमीच तो पुढे घेऊन मात्र जातो. अगदी भविष्यातील जीवनातही सखोल समज आणि आंतरिक परिपूर्णतेकडे तो घेऊन जातो. जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रामाणिकपणे उच्च जीवन जगण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा आतमध्ये काहीतरी बदल तर होतोच. जागृत असताना त्यांच्या आतमध्ये आकर्षणाचं केंद्र निर्माण होतं. याचा अर्थ त्याचे विचार, भावना आणि ऊर्जा हळूहळू सर्व दिशेने धावणे थांबवतात आणि एका स्पष्ट आंतरिक बिंदूकडे जाऊ लागतात. या आंतरिक लक्ष केंद्रितामुळे जागृत जीवनाकडून स्वप्नाकडे जाण्याचा मार्ग देखील स्पष्ट होतो. ही व्यक्ती अधिक जागृततेकडून स्वप्नावस्थेमध्ये प्रवेश करते आणि तिथून ती गाढ झोपेमध्ये जाऊ शकते. गोंधळात नाही तर शांत आणि एकत्रित मार्गाने जाऊ शकते. आणि जेव्हा अशी व्यक्ती जागृत जीवनामध्ये परत येते तेव्हा ती रिकाम्या हाताने परत येत नाही, तर काहीतरी मौल्यवान काहीतरी घेऊन परत येते. म्हणजेच काय घेऊन येते तर थोडीशी शांतता, थोडं ज्ञान, त्या खोल अवस्थेमधून मिळणारी थोडीशी आंतरिक शक्ती, या सगळ्या गोष्टी घेऊन ती परत येते. आता याची तुलना एकाग्र नसलेल्या व्यक्तीशी करून बघूया बरं. एकाग्र नसलेलं मन जागे होण्यापासून स्वप्न पाहण्यापर्यंत विखुरलेल्या पद्धतीने झोपी जाते. जसं चाळणीतून वाळू पडते, प्रत्येक क्षण तुटलेला, गोंधळलेला आणि अनियमित असतो. विचार सुस्पष्ट नसतात, अनुभव अस्पष्ट असतात. परंतु एकाग्र व्यक्ती एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत जाताना जसं पाईप मधून वाहणारं पाणी किंवा लेन्स मधून जाणाऱ्या सूर्यप्रकाशा इतकं गुळगुळीत, स्थिर किंवा केंद्रित असतं. त्यांचे अनुभव स्पष्ट, अर्थपूर्ण आणि अधिक व्यवस्थित असतात. हाच खरा फरक आहे. परंतु ही समज पूर्ण किंवा अंतिम नाही, परंतु ती आपल्याला योग्य दिशेने निर्देशित करते. विषय व्यापक आणि खूप महत्वाचा आहे. म्हणून आपल्यासाठी हा संदेश अगदी सोपा आहे की आपण आपले विचार शुद्ध केले पाहिजेत, आपली कृती वाढवली पाहिजे आणि जागृत जीवनामध्ये एकाग्रतेचा आपण सराव केला पाहिजे. इथे कुठेतरी थोडंसं ते ध्यानाभ्यासाकडे आपल्याला नेतायत. अन्यथा आपण प्रत्येक रात्री झोपेत जात राहू आणि दररोज सकाळी त्याचप्रमाणे परतत राहू. शहाणे नाही, शांत नाही आणि इतरांना मदत करणारे सुद्धा नाही. मग काय उपयोग? परंतु जर आपण विचारपूर्वक आणि लक्षपूर्वक जगलो तर लहान प्रयत्न देखील एका पातळ पोळ्याच्या धाग्यासारखे एक संबंध निर्माण करतात, जे आपल्याला खऱ्या आध्यात्मिक जीवनाच्या मोकळ्या जागेमध्ये घेऊन जातात. इथे हा पाठ दुसरा संपतोय आणि आजचं आपलं चिंतन जे मी पूर्ण केलं त्यासाठी धन्यवाद. धन्यवाद योगिनी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज जी को। आप पार्ट 2 कंक्लूडिंग पार्ट हिंदी में प्रस्तुत करें। स्वागत है। पार्ट 2। इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम एक ऐसी चीज पर नजर डालें जिससे हम सभी परिचित हैं, नींद। हर रात जैसे ही हम सोने लगते हैं, हमारे बाहरी सेंसेस धीरे धीरे सुस्त हो जाती हैं। हमारी आंखें साफ देखना बंद कर देती हैं, हमारे कान सुनना बंद कर देते हैं और हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। इस स्टेज पर दिमाग हमारे दिन के सीन की इमेज बनाना शुरू कर देता है। हमारे विचार, हमारे चिंताएं, हमारी उम्मीदें और जल्द ही ये इमेज सपनों में बदल जाती हैं और हम सपनों की हालत में चले जाते हैं। यह सपनों की हालत झूठी नहीं है, यह हमारी जागती हुई जिंदगी जितनी ही असली है उतनी ही सच, बस नेचर में अलग है। आप इसे बीच का रास्ता मान सकते हैं। एक तरफ जागती हुई जिंदगी है और दूसरी तरफ गहरी नींद। जैसे जैसे नींद गहरी होती जाती है, हम सपनों से और भी आगे बढ़ते जाते हैं। बिना सपनों की नींद
यहाँ दिमाग शांत हो जाता है, कोई इमेज नहीं होती, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। इस हालत में अंदर का इंसान गहरी शांति और तालमेल महसूस करता है। पुराने गुरुओं ने इस अनुभव को खूबसूरती से देवताओं का पर्व कहा है, जिसका मतलब है अंदर की खुशी और आराम की हालत। अब जब हम जागती हुई जिंदगी में लौटते हैं तो हम उसी रास्ते से लौटते हैं जिस रास्ते से गए थे। हम सीधे गहरी नींद से जागने की चेतना में नहीं जा सकते, हमें फिर से सपनों की अवस्था से गुजरना पड़ता है, भले ही बाद में हमें कोई सपना याद ना रहे। यहाँ एक जरूरी बात है, आम इंसान जिसका मन दिन भर बिखरा हुआ, बेचैन और बिना फोकस वाला रहता है, वही कंफ्यूजन सपनों की अवस्था में भी ले जाता है। इस कंफ्यूजन की वजह से जब ऐसा इंसान सपनों की अवस्था में वापस आता है तो गहरी नींद से मिलने वाली शांति और फायदा मिला जुला और बिगड़ा हुआ होता है। नतीजा जागे हुए इंसान को गहरी नींद का पूरा फायदा नहीं मिल पाता, हालांकि ऐसा करना उसका हक और उसकी जिम्मेदारी है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात साफ तौर पर दिखाता है कि जागते समय हमारे विचारों और कामों के लंबे समय तक असर होते हैं। नींद में भी तो हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? हमें सपनों की अवस्था को साफ और रोशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वहाँ की अफरा तफरी को कम करना होगा और उसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और जिंदा दिल बनाना होगा। जब ऐसा होता है तो हम गहरी नींद में महसूस की गई शांति और समझ को अपने साथ जगा हुआ जीवन में वापस ले जा सकते हैं। और यह कैसे होता है? यह दिन पर ज्यादा ध्यान देकर, ऊंचे विचार सोचकर, ऊंचे लक्ष्य बनाकर और जागते समय अपने अंदर जो सबसे अच्छा और सबसे आध्यात्मिक है उसमें जितना हो सके उतना जी कर हासिल होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो नींद सिर्फ शरीर के लिए आराम नहीं रहेगी, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अंदर से नई जान, साफ सफाई और शांत ताकत का जरिया बन जाएगी। आध्यात्मिक विकास एक हफ्ते, एक साल या कभी कभी पूरी जिंदगी में भी नहीं होता, लेकिन एक बार जब सफर सच में शुरू हो जाता है तो यह हमें हमेशा आगे ले जाता है, आने वाले जीवन में भी गहरी समझ और अंदर की संतुष्टि की ओर। जब कोई इंसान सच में एक ऊंचा जीवन जीने की कोशिश करता है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। जागते समय उसके अंदर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इसका मतलब है कि उसके विचार, भावनाएं और एनर्जी धीरे धीरे सभी दिशाओं में भागना बंद कर देती हैं और एक साफ अंदर के पॉइंट की ओर बढ़ने लगती हैं। इस अंदर के फोकस के साथ जागते हुए जीवन से सपने देखने तक का रास्ता भी साफ हो जाता है। इंसान ज्यादा अवेयरनेस के साथ सपनों की हालत में जाता है, वहां से वह गहरी नींद सुषुप्ति में जा सकता है, कंफ्यूज्ड हालत में नहीं बल्कि शांत तरीके से। और जब ऐसा इंसान जागने की जिंदगी में लौटता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता, वह कुछ कीमती चीज वापस लाता है, थोड़ी शांति, थोड़ा ज्ञान, उस गहरी शांत हालत से मिली थोड़ी अंदरूनी ताकत। अब उसकी तुलना एक ऐसे इंसान से करें जिसका फोकस ना हो। एक बिना फोकस वाला मन जागने से लेकर सपनों तक बिखरे हुए तरीके से जाता है, जैसे रेत छलनी से गिरती है, हर पल टूटा हुआ, कंफ्यूज्ड और इरेगुलर होता है। विचार साफ नहीं होते और अनुभव धुंधले होते हैं, लेकिन एक फोकस्ड इंसान एक हालत से दूसरी हालत में जाता है, जैसे पाइप से बहता पानी या लेंस से गुजरती धूप, स्मूथ, स्टेडी और फोकस्ड। उसके अनुभव ज्यादा साफ, ज्यादा मतलब वाले और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यही असली फर्क है। यह समझ पूरी या आखिरी नहीं है, लेकिन यह हमें सही दिशा दिखाती है। यह विषय बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है।
तो हमारे लिए मैसेज आसान है। हमें अपने विचारों को साफ करना चाहिए, अपने कामों को बढ़ाना देना चाहिए और अपनी जागती जिंदगी में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं तो हम हर रात सोएंगे और हर सुबह उसी तरह लौटेंगे, समझदारी नहीं, शांति नहीं और दूसरों के लिए मददगार नहीं। लेकिन अगर हम सोच समझकर और ध्यान से जिएं, तो छोटी छोटी कोशिशें भी मकड़ी के पतले धागे जैसा एक कनेक्शन बनाती हैं, जो हमें सच्ची आध्यात्मिक जिंदगी की विशालता में ले जाती हैं। यहाँ ये भाग पूरा है। धन्यवाद राज, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत करा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तीनों वक्ताओं को, नंद कुमार जी, योगिनी जी और राज ब्रिजपुरिया जी को। आप तीनों को इसके अलावा और कुछ कहना है तो आप अभी कह सकते हैं, फिर मंच खोलेंगे प्रश्नों के लिए। नंद कुमार जी। What I have to say 2 lines. प्लीज डू। So why these 3 states are necessary in our life? Because first, in waking, we learn about the world, around the world, the physical world. We know, learn. In dreaming, we learn about the mind. And then in deep sleep, Sushupti, we touch the peace within. And one more thing, one neuroscientist has made an experiment that we don't see the full dream in our dream state, but we only see the 1/3 part of the dream that we remember. Thank you. थैंक यू नंद कुमार जी। जी योगिनी जी और राज जी, आपको कुछ और कहना है इस विषय में? हा, आता आपण ह्या ज्या तिन्ही अवस्था बघितल्या, जागृत, स्वप्न आणि सुषुप्ती, तर या तिन्ही अवस्थांचं सगळं वर्णन आपण आता ऐकलं. या अवस्था येतात आणि जातात. प्रत्येक अवस्था अशी आहे की जी दुसऱ्या 2 अवस्थांचा अनुभव आणि त्याच्या खऱ्यापणाला बाधा करते. जागृत आहे ती स्वप्नाला, स्वप्नाला येते, स्वप्न येते सुषुप्तीला. आणि प्रत्येक वेळेला मी ह्या सर्वांचा एक त्या तिन्ही अवस्थांचा साक्षी आहे. मी आहे की नाही तिकडे, तिन्ही अवस्थांमध्ये मी आहे. त्याच्यामुळे मी त्यांच्याकडून बाधित होत नाही. Can she speak in English or Hindi? We can't understand what she's saying. योगिनी जी, आप ये हिंदी में अर्चना जी, बताएंगे? जी। जब भी स्पीकर्स आ जाते हैं तो दे कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी सो अदर्स कैन अंडरस्टैंड। सॉरी जी, योगिनी जी का आपने यू कैन ट्रांसलेट और आई विल ट्रांसलेट। आप हिंदी में बोलना चाहेंगे या मैं, आपने इतना बोला? आप मराठी में कंटिन्यू करिए, अर्चना ट्रांसलेट कर दी। देखिए, ये जो 3 अवस्था हमने अभी देखी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों जो अवस्था है वो एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हाँ, हर एक अवस्था दूसरे 2 अवस्थाओं को अनुभव भी लेती है और वो अनुभव जो है वो एक्चुअली सच्चा अनुभव नहीं रहता, उसका वो मतलब इनकार करती है कि मैं ये तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूँ, बराबर है, और मैं ये तीनों अवस्थाओं से अफेक्ट नहीं होता हूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे ड्रामा में यदि मैंने बेगर का रोल किया तो असल में तो मैं बेगर नहीं हो जाती ना, और जैसे मैंने राजा का रोल किया तो असल में मैं राजा भी नहीं हो सकती, तो फिर मैं ना बेगर हूँ ना राजा हूँ, मैं जो हूँ मैं तो वैसे ही हूँ। तो उसी तरह जैसे स्वप्न में जो जागृत अवस्था में जो दिखने वाला है या सुषुप्ति में जो रहने वाला है, या जो सब दोनों भी जो अवस्थाएं है, उसमें जो मैं हूँ वो मैं जैसे कि वैसा ही रहता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मतलब जागृत में समझो मैंने देखा कि ये स्वप्नों में मैंने जो भिखारी को देखा तो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? तो मैं सब दोनों अवस्थाओं का एक साक्षी हूँ। बस मैं उधर देख रहा हूँ कि एक बार मैं जागृत भी हूँ, एक बार मैं स्वप्नावस्था में हूँ और एक बार मैं सुषुप्ति में। यस, धन्यवाद। आई होप सबको समझ आया और कहा। राज जी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगी इस विषय पर? हम अंकल लोग से सिर्फ ये सुप्रीम अवस्था है इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं। नंद कुमार जी, वो आपसे समझना चाहती है सुप्रीम अवस्था के बारे में।
It is higher state, higher self state, means enlightened state. जी, आई होप राज जी आपको संतुष्टि हुई होगी और समझे होंगे। नहीं हुई हो तो चंद्रकांत शिंदे जी या तो शिंदे जी आप समझा सकते हैं राज जी को और हम सबको। थैंक यू। राज जी का वॉइस बहुत अच्छा है और एक्सप्लेनेशन ही बहुत अच्छा दिया उसने, और योगी ने तो बेस्ट लेक्चरर है, और राउत very nice material he has brought and presented to all of us. All the three people dealt very nicely. Yes, जो प्रश्न किया है, what is beyond? Yes, it is like wakefulness state, dreaming state, and sound sleep state. But sound sleep state is also a sleep. Dreaming state is not a continuous sleep. And in waking state, there is no sleep. So what is beyond sound sleep? That is also named either beyond or Turiya state. That is the fourth state in which we are connected to the oneness of life or Buddhic state. So when we say this Jagruta Avastha is compared with the mineral kingdom, like, yes, we are Jagrut, but we are always influenced by the outer stimuli. Our thoughts are influenced, our actions are influenced, and our all behavior is influenced behavior. So this state is compared to the mineral kingdom, more tamoguna, physical. But in plant kingdom is a dreaming state. Plants are always dreaming. They are conscious state, but dreaming state. And therefore, they are having those kinds of feeling. And the third state is the sleeping state. And this sleeping state is in the animal kingdom. That is, animals are, in a way, they are sleeping in the sense, even in the sleep, they are not calm and quiet. Still they are moving. So it is rightly said, consciousness sleeps in the mineral kingdom, dreams in the plant kingdom, and moves or conscious in animal kingdom. Then what is beyond? In human kingdom, the consciousness is awake. So our duty is, as a human being, we must evolve consciously in all these states. That is what all the three speakers spoke. Even in the waking state, we must be conscious. Even in the dreaming state, we must be conscious. Even in the sleeping state, we must be conscious. Because sleeping state is the dreaming state is the feeling state. And this feeling state, dreaming state, is directly connected with the Buddhic plane. And whatever initiation or anugraha in Marathi we call, it is given in this dreaming state. The first initiation takes place in the dreaming state, astral plane. Then the further initiation, they occur in the mental plane, sleeping state.
And these initiation is nothing but the unfoldment of consciousness. And this unfoldment of consciousness takes place in the beyond state. Not the human, these three states, but it is beyond. In the sense, in the beginning, we get the process of getting information, knowledge, and then in the deep sleep state, we experience something. And if we are conscious, we remember it, and it brings change in us. That is called the expansion of vision, expansion of consciousness, and also we go on thinking more and more. One question was, may I tell something? Raman Maharshi was asked by one young man, and he asked about the whether we have to do efforts or not. If it is done by the higher states, we are spiritually enfolded by the higher state, then whether efforts are necessary or not. Then Raman Maharshi said, the questioner asked, Krishnamurti teaches the method of effortless and choiceless awareness as distinct from that of deliberate concentration. Then Raman Maharshi replies, if we can attain that state and able and abide in that state, higher state, that's all right. Then there is effortless, choiceless awareness is distinct. If we attain that state, then abide in it. That is what Raman Maharshi told. But further he explained, one cannot reach it without effort. The efforts of deliberate meditation is essential because all the old age vasanas, inherent tendencies, turn the mind outward and external objects or worldly samsara. All such thoughts have to be given up and the mind turn inwards. For most people, requires effort. Of course, every teacher, every book tells the sadhaka, aspirant, to keep quiet, mauna. But it is not easy to do so. That is why all this effort is necessary. So this is what the beyond state. Without this dhyan, dharana, samadhi state, we can't go beyond. Dhyana is our communication with our soul. Dharana, soul also communicates with us. This is second stage. And samadhi, we totally involve in the soul. That state is important and that is beyond. That is what we are taught in theosophical teachings. And W.Q.Judge has explained these three states are important because our three bodies are important: physical, emotional, and mental. So unless we understand these three states, yes, that curiosity is there. What is beyond that? Then there is astral traveling, silver cord, how it helps us to go beyond. All these states, they come. That is what I want to add. The question is deeper and it requires much explanation and contemplation. Thank you very much. Thank you, Shindeji. I don't know whether I have convinced her or not, but something I have tried to explain. Yeah. Thank you. Thank you, Shindeji. जी अब और किसी शिंदे को सर जी माधवी जी शिंदे सर से प्रश्न है कि हाँ। ये तुरीय अवस्था जो है इनिशिएशन हाँ। के पहले आ सकती है कि इनिशिएशन के बाद आएगी? This can be answered only one who has initiated.
I am not initiated. तो माधवी जी। जी, हमको अपने आप से ही एक्सप्लोर करना होगा, हमको अपना जवाब खुद से ही कभी कभी ना कहीं मिल जाएगा। और किसी को कुछ कहना है? जी, किसी और को कुछ कहना विमल है? जी हैं, विमल जी, सुदन जी हैं। अ, I just want to say टॉपिक बहुत टफ है, इसमें कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सही सही सही। है। जी योगिनी ठीक जी, है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी हिंदी में कहिएगा। हिंदी में कहूँ ना, हाँ, मतलब ये जो तीनों अवस्था है ना, वो तीनों अवस्था भूमिका है, और उसको देखने वाला मैं साक्षी हूँ। तो वह मैं नहीं हूँ, वो है सुप्रीम हूँ। वही उन्होंने पूछा ना कि सुप्रीम क्या है, तो सुप्रीम वही है। ये तीनों में मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ अलग ही हूँ। और मैं ये सब देख रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, जागृत हूँ, स्वप्न हूँ, स्वप्न के आगे हूँ, जो भी है वो मैं साक्षी हूँ उसका, वो मैं नहीं हूँ। ये सब भूमिकाएं है मेरी, तीनों भी। जी जी, बहुत बहुत जी देव जी, आपने अनम्यूट किया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मुझे बहुत इल्यूमिनेटिंग लगा जो तीनों अवस्था हैं। ये पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होगा, बट आई शुड करेक्टेड कि नहीं, ये जो आपने कहा वेकफुलनेस, ड्रीमिंग एंड ड्रीमलेस। तो आज ये बहुत अच्छा ज्ञान मिला। एंड मुझे भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तो सुन के बहुत अच्छी लगी है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर क्लासेस। थैंक यू ऑल। थैंक यू देव। जी। प्रवीण भाई, आप वीडियो ऑन किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रवीण भाई? सर बड़ा अच्छा था और बड़ा इल्यूमिनेटिंग था, और शिंदे जी को भी धन्यवाद देंगे सर कि उन्होंने सब राव सर और सबने जो जो भी स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल नाइस टू सी देम अगेन। गुड टू सी थैंक यू टू सर। जी हर्षवर्धन भाई, आपके विचार? Yes, 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 yes. A very interesting subject, Nand Kumar. I must congratulate you for this particular subject. Very thought-provoking, the way that we have to live our life. Do you understand what the laborers do? Most of the people understand. The laborers for the whole day work very hard. And at night, they go to sleep. And they sleep in such a way that they have that complete sleep out of fatigue and hard work. They have the sound sleep. They never think about anything. Next day, the life goes on. This is the first kind of life. You can say the state of life that is lived on the earth with hard labor, physical, and as well as somewhat intellectual. Second state comes with the people who are highly connected with the intellectual work. And they don't have to work physically. They have the table work. They have the mental exercise. They have the plans. They have certain things which they have to carry out in the whole world with their abilities. They have to invent certain things. They have to exercise certain things for the welfare of the people. So we find this second kind of people, mostly people who are of the economically well established persons. They do this kind of work, and the same time they also earn that bread, and they don't go for any laborious kind of work. And of course they are advised to work in the gym to train their bodies in that way, but that is not the special training for the physical world. Now we have the third kind of people. They go beyond the particular mental status. They have the thought powers, they understand it, and in their deep sleep, they find the miraculous kind of results. This we have to understand. And it is the meditative mind. Krishnaji was trained from his boyhood
till he was at the age of 24 or 25. And he might have pondered so many things about that. He might have thought about certain things about the Theosophical Society, about the people around him, about the luxurious life, everything. But that particular state came when he had that consciousness, when he had in his deep meditation, he understood that he had been there at the fountain of the bliss. And he declared that truth is the pathless land. How can he say like that? So that is a deeper mental state. Even we find many examples of such scientists who had invented this kind of specialized kind of inventions which had helped the whole humanity around the world. Newton has seen the fruit falling down. Many people had seen earlier also. Nobody had thought about that. But in his inquiry, in his questioning himself, he found that how this fruit came down. It didn't go away from in other direction. So there must be something in the land, and then law of gravitation was there. So we find certain miraculous things. If we go on doing something very special and still we are dissatisfied with the work, what happens? We don't find the answers, but in your deep sleep, you will find the answer. That becomes the intuitive mind. In Isis Unveiled, Madame Blavatsky has described this kind of thing, and she amalgamated this theory of the scientific inventions which created the mental abilities to enhance the particular thing with the inventive kind of approach in the material world. So that became a kind of specialization for the persons highly in the oriental kind of atmosphere as well as in the Western kind. So this is the work that we have to see. Only Vedvyas saw that bird that was prayed and the sloka came out from his mouth and the whole Mahabharata came into existence. So that comes in that way. Nobody teaches you in that way when you are at that state. Of course, we have to learn all the worldly affairs, all the worldly education, everything we have to derive from the world. But then the state comes when in your deep sleep, you find the solution of your own problems. And that is the meditative mind. And of course, this varies from man to man, from women to women, individuals to individuals, from cultures to cultures. So in this way, today's topic is very interesting in that way. And we have come across many such examples, which are really elaborating the main crux and main idea of our understanding. That means we have to understand ourselves. Sometimes it is the well-graded kind of knowledge, and sometimes it comes by flux. It comes without any kind of such impulse, we can say. And of course, there are impulses that we never notice. So we have to notice such impulses when we are awake, and when we are in deep sleep, such impulses have the reflections in our mind, and at the same time, we come to know by just the flash of light that comes. It is a turn, no? That moment comes. It is the experience of that moment, and you realize that is the higher state of mind. So I think today it is a really nice topic. We can see so many things, and many examples can be just illustrated here. Thank you very much, Rahulji, for your this wonderful and beautiful subject. And of course, Raj Bridgepur, you spoke very well in Hindi, and I like that Hindi subject. That is my Rashtra Bhasha. I like Hindi very much. I would like to speak in Hindi more. Sometimes very interesting. And of course, Marathi, we can understand. Huh? Shindeji, I like that. Marathi should continue at least for 2 months' time. So, very, very nice. It sounds good, and we like to listen to that. And it is very nearer to our Gujarati language also. Thank you very much, and congratulations to everyone. And thank you, Shindeji, for your more elaborate kind of examples that you gave. And you went very deep into that illustrative kind of mind.
And I like that. Some questions are there, but this is not the time for a kind of deliberation. It's all right. Thank you very much. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत ही सुंदर था जी। तरल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर। तो अभी किसी और का कोई और सवाल ना हो या किसी को और को कुछ कहना ना हो तो हम समापन की ओर बढ़े। उसके पहले तरल जी, आपको जो कुछ कहना है? जी, बहुत ही बढ़िया रहा आज का। बस मैं यही 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि राज जी अंतिम समय में आई। आपने देखा होगा कि जो फ्लायर था उसमें रोहित भाई जो अभी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं उनका चित्र था, लेकिन वे अपनी एक सेवा के लिए गए। कोई उनका बहुत ही निकटतम मित्र के यहाँ डेथ हो गई तो उन्हें जाना पड़ा और उस एवज में राज जी आ गई। तो इस तरह से त्रिवेणी मीटिंग में अचानक से कोई स्पीकर आता है, बोलता है और फिर वो नियमित हो जाता है। तो ये इसका एक जो विधान है वो यही है कि मेन स्पीकर ने स्क्रिप्ट तैयार की, लैंग्वेज स्पीकर ने उसका अनुवाद किया और उस तरह से वो तीनों भाषाओं में यहाँ पे वर्णित हुई। बहुत बहुत आभारी हूँ शिंदे जी, हर्षवर्धन जी, नंद कुमार जी और सभी लोग जैसे प्रवीण जी, विपिन जी, सभी लोगों का, योगिनी जी का भी। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए कि योगिनी जी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुरुक्षेत्र जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 2-4 लाइनों में उसका महत्व बताएं तो उपस्थित लोगों को भी उसका जागरण हो, और हम इसका त्रिवेणी मीटिंग पर भी उनके लौटने के बाद लेने वाले हैं। जी कहिए योगिनी। अनम्यूट। हाँ। कुरुक्षेत्र, जिधर भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया, वो जो क्षेत्र है बहुत ही पावन क्षेत्र है। उसको धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ऐसा भी बोलते हैं। जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा में है, चंडीगढ़ से पास है। और उधर मैं गीता संदेश देने जा रही हूँ। मातोश्री ट्रैवल करके डोंबिवली में है, वो ट्रैवल वाले मुझे उधर प्रवचन के लिए लेके जाने वाले हैं। तो बहुत ही मेरे लिए भाग्य की गोष्ट है, भाग्य का ये अवसर है कि कुरुक्षेत्र में जाके मुझे गीता कंठस्थ भी करनी है, बोलने भी है और निरूपण भी करने का है और सबको समझाने का भी है कि गीता में क्या बताया है और उससे हमें क्या लेना है। ये तो गीता तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें उससे कुछ मिल जाए तो वो अच्छा है ना। डेली जीवन हमारा सुधर जाए, जो गीता में बताया है वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली। बहुत बढ़िया। और इस चीज को हम यहाँ पर भी हमारे जो अवधि होती है 1 या 2 त्रिवेणी मीटिंग में लेंगे, क्योंकि गीता तो हमारे थियोसॉफी में भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि आप एक तरह से पब्लिक मीटिंग के लिए जा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपकी ओर। और अर्चना जी धन्यवाद, Yes, yes, धन्यवाद, धन्यवाद। yes. आप किधर से हो राज जी? आप किधर से हो? कानपुर। कानपुर से, अच्छा। कानपुर से। यस मुझे अर्चना। लगा कुरुक्षेत्र के नजदीक हो तो आ जाओ उधर भी, ऐसे नहीं इसलिए नहीं, पूछा। दीदी जी हम समापन की ओर जा रहे हैं। तो अर्चना जी आपसे निवेदन है कि शांति। तो सभी को सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, न मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ति।